Hello everyone. Now we are going to discuss the topic specification. Basically, as we discussed earlier, the specification is of mainly two types: general specification and detailed specification. So here we are discussing the general specification. The general specification gives the idea and class of work in general terms and are generally attached with the rough cost and detailed estimate. General estimation for फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का अगर जनरल स्पेसिफिकेशन आप निकालते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज होंगे या ये सारी चीजें जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें इसी के बीच आती हैं. फर्स्ट वन इज फाउंडेशन एंड प्लिंथ. फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक इन लाइम और सीमेंट मोर्टार. सीमेंट मोर्टार जो यूज होगा उसका रेशियो होगा 1:6 ओवर अ बेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट. एक सीमेंट कंक्रीट की एक लेयरिंग होगी, इसका रेशियो होगा 1:6:12 और 1:8:16. सुपरस्ट्रक्चर शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार और उसका रेशियो होगा 1:6. कोई भी स्ट्रक्चर जब भी आप बनाना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत आप उसकी फाउंडेशन से करते हैं. तो फाउंडेशन में जो मटेरियल जो भी ब्रिक वर्क यूज होगा वो फर्स्ट क्लास होगा एज जैसा कि मैंने बताया. सेकंड है आपका सुपर स्ट्रक्चर, उसमें आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज होगी और जो रेशियो होगा सीमेंट मोर्टार का उसको जोड़ने के लिए 1:6 का यूज करेंगे. उसके बाद आप आते हैं डीपीसी पे या डैम प्रूफ कोर्स पे. वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट लेयर का और सीमेंट कंक्रीट लेयर का जिसका रेशियो होगा 1:2:4 विद 1 लेयर ऑफ बिटुमेन लेड हॉट और एनी स्पेसिफाइड वाटरप्रूफ मटेरियल. बेसिकली डैम प्रूफिंग आप करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए. उसके लिए आप या तो बिटुमेन हॉट बिटुमेन का यूज करेंगे या फिर अगर कोई अदर स्पेसिफाइड वाटरप्रूफ मटेरियल होगा तो उसका आप यूज करेंगे. उसके बाद आप आते हैं रूफिंग पे. रूफिंग शैल बी ऑफ आरसीसी स्लैब जिसका रेशियो स्पेसिफाइड है यहाँ पे 1:2:4 कवर्ड विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमेन लेड हॉट एंड a layer of lime or cement concrete 8 centimeter thick over it with a tile flooring with cement flush pointed on the top. Next one is आती है आपकी flooring. Flooring shall be of terrazzo in drawing, dining, bath and water closet. 4 centimeter thick, plain conglomerate polished floors in bedrooms and in other rooms. Doors and windows. Doors and windows shall be teak wood, panelled or glazed with gaze shutters to outer doors and fixed wire base to windows, and ventilators fittings shall preferably of brass or good quality metal. Next one आता है आपका finishing. The inside and outside walls shall have 1.25 centimeter thick cement plaster. Drawing, dining and bedrooms inside of walls shall have 2 coats of distemper and other room shall have 3 coats of whitewash. The outside of wall shall have 2 coats of color washing, once over 1 coat of whitewashing. Next one is painting. Doors and windows shall be given 3 coats of white lead where exposed and white zinc or cream or grey silicate paint elsewhere. ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करते हुए जो आपको आ रहे हैं वो ये है कि जो आप जनरल स्पेसिफिकेशन किसी भी बिल्डिंग का होगा वो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में ये सब आएंगे. नेक्स्ट वन इज miscellaneous. First class building shall be provided with first class sanitary and water supply fittings and electrical installation. A plinth protection 1.5 meter wide of brick slopes away from the building shall be provided all around the building. Plinth area जो रेट होता है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का वो है 4500 से 5500 रुपए पर स्क्वायर मीटर. रेट से डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेरी भी कर सकता है. बेसिकली 4500 से 5500 रुपए के पर स्क्वायर मीटर रहता है. ओके, सो दीज आर द टर्म्स: फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर, डीपीसी, रूफिंग, फ्लोरिंग, ग्लोस, विंडो, फिनिशिंग, पेंटिंग एंड मिसलेनियस वर्क.
इन सब का कंबाइंड फॉर्म आता है 4500 से 5500 रुपए के बीच पर स्क्वायर फीट, और ये रेट वेरिएबल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और डिपेंडिंग ऑन द situation or the budget. Second thing is that now we are going to discuss the general specification for the second class building. It is clear that with all these points that the specification also includes the grading of that material used in the particular building. Now we are going to describe the general specification of second class building. Second class building. So in general specification of second class building, the following terms are as follows: foundation and plinth. Foundation and plinth. All walls shall be built of first class burnt brick laid in mud mortar over a bed of lime concrete. Top course of the plinth shall be laid of cement mortar. The ratio of that mortar is given as 1:6. Superstructure. All walls shall be built of first-class burnt brick laid in mud mortar. The following portions to be built in cement mortar 1:6. 1:6 रेशियो का जो जितना भी आपका प्रपोर्शन रहेगा वो किन किन चीज़ों में यूज होगा वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. Shills of windows, C windows and almirahs. Back of almirahs, top course of parapet, jumps of doors, windows and almirahs. Drip course, cornice and weather course, 2 courses below the RCC slab and roof battens. Next one is DPC, damp proof course, 4 centimeter thick shall be of Portland cement concrete और ratio उसका रहेगा 1:2:4 with 1 coat of bitumen lid और या other specified material जो भी specify होगा वहाँ पे. Roofing, all main rooms shall be have RB roof or RC roof and first class और second class mud roofs over other rooms. जितने भी रूम रहेंगे वो reinforced brick के या reinforced concrete की roof slab रहेंगी, roofing करेंगे आप. Third one is next one is floors. The main rooms shall have conglomerate floors and verandas shall have flat or brick on edge floors over cement concrete and sand. Doors and windows. Interior and exterior surface of walls shall be cement plastered 1.25 centimeter thick, covered with 3 coats of whitewashing. मतलब जितने भी पल्ले मतलब इसको आप हिंदी में कह सकते हैं डोर्स और विंडोज जो रहेंगे वो shall be cement plaster, सीमेंट का प्लास्टर होगा उस पे 1.25 सेंटीमीटर थिक और वाइट वॉशिंग होगी 3 कोट्स की. Painting. Doors and windows shall be painted with 3 coats of chocolate paint or any other approved paint. Miscellaneous. Roof drainage shall be carried by means of gargoyles and khasi pernals. Plinth protection 1.5 meter wide of brick shall be provided all around the building. Basically इसका जो रेट आता है पर स्क्वायर मीटर का सेकंड क्लास बिल्डिंग का which varies from 2500 to 3000 per square meter. Clear? Now we are proceeding for general specifications for third class building, in which following terms are given as foundation and plinth. All walls shall be built of second class burnt laid in mud mortar over bed on lime concrete and superstructure. All walls shall be built of second class burnt brick laid in mud mortar. Roofing, all rooms shall be second class mud roof and veranda shall be GI sheet, galvanized iron sheet roof. Floors everywhere shall be brick over mid concrete and cement pointed. Doors and windows shall be of kale, cheer, mango or any other of softwood, ledged, battened or brazed type. Finishing. Interior surface of walls shall be mud plastered and covered with 3 coats of whitewashing. The outside surface shall be flush lime pointed. जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी क्लास डिक्रीज हो रही है, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते आते आपके जो डोर्स एंड विंडोज हैं वो सारे आपके चीर मैंगो और इन सब की लकड़ी से बन रहे हैं. इससे पहले आप गुड क्वालिटी वुड यूज कर रहे थे.
नेक्स्ट वन इज पेंटिंग. डोर्स एंड विंडोज शैल बी गिवन 2 coats ऑफ ऑर्डिनरी चॉकलेट पेंट. और इसका जो रेट आता है वो आता है 1500 to 1800 mm per square meter. Now we are proceeding for general specifications for 4th class building. इसमें क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन और भी डिक्रीज करेंगे आप, और इसका जो एरिया पर यूनिट एरिया जो होगा वो भी आप एरिया पर यूनिट प्राइस जो होगा आपका या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो भी आपकी क्लास 1, 2, 3 से डिक्रीज करेगी. फाउंडेशन एंड प्लिंथ. ऑल वॉल्स शैल बी यूनिट ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक वर्क लेड इन मड मोर्टार. Superstructure. All walls shall be built to sand molded sun-dried brick laid in mud mortar with the exception of following, which shall be built in second class work in mud. 2 course underneath the roof patterns. Jambs of doors and windows. Pillars under the roof beams. Sills of windows and almirahs. Roofing. Third class mud roof. वही roofing as a third class करेंगे आप. Floors. Mud floors. 2.5 centimeter mud plaster over the rammed earth, and doors and windows shall be kale, cheer or any other soft wood batten doors. Finishing. Mud and mud plaster inside and outside. Painting. 2 coats of ordinary painting. And plinth area rate जो इसका आएगा फाइनलाइज करके, ये आप देख रहे हैं ये सारे जितने भी टाइप क्लास के बिल्डिंग आपने पढ़े क्लास 1, 2, 3, 4 का सबसे लो है 800 rupees to 1000 rupees per square meter, and which is also variable. Now we are going to discuss about the detailed specifications. So basically detailed specification general specification से differ कैसे है, तो पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं. Detailed specification gives the method of construction and specify the nature of work. जनरल स्पेसिफिकेशन में ये था कि चीजें आपकी जैसा आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन से लेके आप फ्लोरिंग रूफिंग तक जाएंगे, ठीक है, और मिसलेनियस चीजों में आएंगे, तो आपके लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स डिस्क्राइब कर दिए गए, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, मतलब ग्रेडिंग कर दी गई एक हिसाब से मटेरियल जो भी आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में. डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में है कि मटेरियल तो आप डिस्क्राइब करोगे, इसके अलावा किस टाइप कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे. सो फर्स्ट वन इज excavation of foundation. Equality of pressure should be aimed at the designing foundation. The foundation trenches shall be taken down to extract exact width of the widest part of the foundation. The trenches, where possible, shall always be taken down to a few centimeters into good hard soil in order to ascertain the nature of the soil. The bottoms of all trenches shall be well watered and rammed. The soft and defective place shall be filled with concrete or with any other hard material as directed by the engineer. It means कि जो भी आप excavate कर रहे हैं उसमें सॉइल तो यूनिफॉर्म है नहीं हर जगह. अगर आप सर्टेन डेप्थ तक उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं तो जहां जहां आपके राइज एंड फॉल ज्यादा आएगा या जहां पे डाउन ज्यादा होंगे तो वहां पे आप या तो कंक्रीटिंग कर देंगे उसको लेवल करने के लिए जो एक्सकेवेशन वर्क आपने किया है. ट्रेंच को लेवल करने के लिए आप उस जहां जहां पे फॉल ज्यादा होगा वहां पे आप कंक्रीटिंग कर देंगे या अदर हार्ड मटेरियल से उसकी फिलिंग कर देंगे. If rocky surface is met, it shall be made as leveled as possible, and any small inequalities shall be filled with concrete. Foundation in bad soil, where great defects or bad soils are met with, such as black cotton soil, it may be necessary to resort to piles which may be of wood, steel or reinforced concrete. Where the depth of bad soil is not excessive, the foundation may consist of beam or concrete arches of concrete pillars, the pillars being taken down into good soil. In some cases, the structure may be built on a raft or concrete reinforced with a grillage of arch beam. Next one is earth filling. Earth used for filling shall be free from saltpeter and white ants, and only foamy and clayey soil free from clods shall be used. It shall be laid in 15 centimeter as we discussed earlier, and each layer shall be well watered and rammed with iron rammers. In case of high embankments, the layer shall not exceed 30 centimeter depth, and the settlement allowance shall be at 10% of
height of uncompacted fills. It means earth filling जो भी आप करेंगे उसमें जो सेटलमेंट होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा अगर वो 30 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं कर रही है डेप्थ फाउंडेशन की. Concrete in foundations. Lime concrete or cement concrete shall be used in foundation to be a base for the superstructure. Next one is lime concrete. Lime concrete के ingredient क्या क्या हैं? Lime, सोरखी, sand, brick ballast or stone ballast and water. Lime. Lime is always used as putty lime of class B, semi-hydraulic or quick lime form. And class C, non-hydraulic in hydrated or quick lime form shall be used as directed by the engineer. The hydrated lime used should be thoroughly mixed with water in suitable container. It shall then be stirred into thick consistency and left undistributed for not less than 36 hours. Extra water should be drained out and putty should be used. Similarly, quick lime should be converted into putty. The volume of lime putty shall be taken as equal to the volume of dry sand lime. Surki. Surki shall be obtained by pounding fully bricks or bats. It shall be free from admixture of clay, dust or foreign material. No unburned brick or bat shall be used for grinding into a surki. Next one is aggregate. The brick aggregate shall be broken from the first class or second class brick on other on their beds from dense overburnt bricks. The gauge of the ballast shall be 2 cm to 4 cm. The stone aggregate shall consist of good hard through broken stone, gravel or shingle of the gauge specified. It shall free from dirt, leaves or any other organic or admixture of soft or decayed stone. Aggregate जो भी आप यूज करेंगे वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रिक और उनका बैट्स और अदर डेंस ओवरबर्न ब्रिक होने चाहिए. Water used in construction shall be clean, free earthly vegetables or organic impurities like alkalis, salts, etc., which cause many effects which are bad for the mortar. Now we are going for mixing and laying. The aggregate previously well soaked shall be measured and laid on a clean platform by bricks cut 555 or wood. The platform shall be sufficient size to give ample room for mixing 23 to 28 cubic meter of concrete. Lime and surki shall be measured and laid on the aggregate. The whole dry and wet mix in then turned over 3 or 4 times so that it shall be thoroughly mixed. Concrete shall be laid slowly and gently in layer of 15 cm and thoroughly consolidated with 5.5 kg. Rammers shall be used for consolidating the edges. Tests. The consolidation of the concrete is said to be complete if a stick and waste from a height of 1 meter rebounds with ranging sound. The second test is by digging a hole in a concrete and pouring water in the hole. If the consolidation is complete, the water shall not be absorbed in the concrete. Next one is curing. The concrete shall be kept wet for a period of at least 10 days. No brickwork masonry shall be laid on the concrete for at least 7 days after laying. Permissible safe loads of the foundations. Ordinary earth 5.46 and these readings are in tons per square meter. Makeup ground well consolidated, which is 5.46 to 10.93 tons per square meter. Soft clay 16.4 to 21.86 tons per square meter. Loamy soils and sand mixed clay 32.8 to 43.7 tons per square meter. Okay, now use of coarse aggregate for different types of concrete. 65 mm nominal sized for unreinforced mass concrete work or
work on ordinary work. Second one is 40 mm nominal size for unreinforced mass work of cement concrete on small jobs over 15 centimeter minimum dimension. For reinforced works, it shall be used where the dimension of members exceeds 45 centimeter. Third one is 20 mm nominal size unless otherwise mentioned. If it will be used as under reinforced concrete between 5 centimeter minimum size conglomerate floor. Third one is RCC work exceeding 12 centimeter but not exceeding 45 centimeter in minimum dimension. Fourth one is 15 mm nominal size. Unless otherwise mentioned and specified, this aggregate shall be used in cement concrete works of the following description. First one is RCC lintels and slabs under 12 centimeter and more than 5 centimeter. Second one is RCC posts and battens less than 40 centimeter sectional area. Next, cement concrete. Ingredients: cement, sand, brick or stone aggregate, gravel or shingle, and water. Cement shall be Portland cement of the Indian Standard Specification as per IS 269. All cement shall be brought to the site of work in bags with the seals intact, fresh and from moisture. All cement shall be gauged by weight and shall be added at the mix in whole 50 kg bags. Fine aggregate, which is also known as sand. It shall consist of clean, hard, uncoated grains of nature sands or crushed stone, sand, rushed gravel, sand, or combination of any of these free clay, loam, silt, organic, or other deleterious substances. The sand shall be washed before using the sand is washed before using as shown in the above figure for washing sand. Coarse aggregate. Coarse aggregate or grit shall consist of good, hard, tough, and clear water or budgery obtained from natural streams. It also shall be free from dirt, clays, leaves, or other organic matter, and soft or decayed. Water, as we discussed earlier, water is free from vegetables or other organic impurities like alkalis and salt. If these substances are situated in the water, then they will also act with cementous chemicals and affect the strength of the structure. Mixing. Cement concrete ratio 1 is to 6 is to 12. In all proportions of cement concrete, except 1 is to 1.5 is to 3, 1 to 4, 1, 3, 6. The measured quantity of cement is to be placed on the top of measured quantity of the aggregate, and the whole mass mixed 3 or 4 times so that it will be shall truly incorporated. The required quantity of water, clean rather drinking water, shall be added, and the entire wet mass shall be turned over unto the homogeneous mixture to the required consistency is obtained. मिक्सिंग जब भी आप सीमेंट कंक्रीट का मिक्स बनाएंगे या कोई भी आप कंक्रीट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले ये करते हैं कि सीमेंट और अदर जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सबको मिलाते हैं और बिना पानी डाले पहले उनको मिलाते हैं ताकि मटेरियल थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी गेन कर ले. उसके बाद वाटर उसमें डालते हैं आप, देन जिससे आपकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी ऑब्टेन हो सके. Next one is laying and consolidation of cement concrete in foundations. Concrete shall be handed from mixing platform in the place of final deposit and rapidly as possible. It shall be laid slowly and gently in layers of 15 centimeter and thoroughly consolidated with 5.5 kg rammers. बेसिकली होता ये है कि कंक्रीट जो भी आप करते हैं वो लेयरिंग करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है लेयर, और प्रॉपर टैंपिंग करते हुए चलते हैं. बैच बॉक्स जो आप बनाते हैं, जो इसको आप माउल्ड कह सकते हैं, बेसिकली वो रहता है 15 इंचेस इंटू 15 इंचेस इंटू 9 इंटू 5. ओवरऑल वॉल्यूम जो उसका निकल के आता है दैट इज 1.25 क्यूबिक फीट और 38 सेंटीमीटर बाई 38 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विच इज
0.036 m cube. Reinforced cement concrete. Standard mix for reinforced concrete is 1:2:4. In addition to the round steel bars and embedded to make the structure strong to take up the tensile stress. Mixing. Two incidents, cement and sand shall be hand mixed dry 3 or more times until the mix comes in uniform color. The measured quantity of coarse aggregate shall then be added to mixture and whole mixed dry thoroughly. The required quantity of water shall then be added with the dry material. Next one is reinforcement. Round steel bars is used as far as possible shall be used for in preference of square bars. The bar shall be thoroughly cleaned of rust, scale, and of coating that might destroy or reduce bonds. The ends of all bars shall be properly hooked and bends shall be made as per drawing and the design supplies. It means जो भी बार आप यूज करते हैं वो स्क्वायर बार नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह पे आप राउंड बार यूज करते हैं और उसकी जो क्लीन होनी चाहिए, रस्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें और पूरे पे ऐसी किसी भी मटेरियल की लेयरिंग नहीं होनी चाहिए जो कि कंक्रीट के साथ स्टील को बाउंड होने से रोके. क्लियर नाउ. और जैसा जैसा आपका बीबीएस दिया होता है, बीबीएस स्टैंड फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जितने भी बेंड्स होते हैं बार में वो प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. मिक्सिंग सीमेंट कंक्रीट ऑफ ग्रेड 1:2:4 और 1:3:6 सेम एज इट इज. सबसे पहले जितना भी ड्राई मटेरियल है वो सबको हैंड मिक्स किया जाता है 3 से 4 बार ताकि वो यूनिफॉर्मिटी गेन कर सके, कलर उसका जो होता है वो यूनिफॉर्म हो जाए. सेकंड वन, उसके बाद उसमें वाटर जो भी मिलाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड देन द मिक्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज रेडी टू यूज. प्लेसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट. Concrete shall be handled from mixing platform to the final deposit as rapidly as possible. Just because setting time बहुत कम होता है इसका, इसलिए इसको जल्द से जल्द जहाँ पे भी इसको फाइनल डिपॉजिट करना है वहां तक ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. After depositing, the concrete is to be ridded, vibrated, tamped or worked to ensure that no hollow places are left. These 4 points: vibration, tamped or worked to ensure that no hollow places are left. वाइब्रेशन किया जाता है एयर वॉइड्स भरने के लिए ताकि कंक्रीट थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहे और प्रॉपर डेंसिटी गेन कर सके आफ्टर ड्राइंग. नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स एंड सेंटरिंग. फॉर्म्स wherever required shall be sufficiently rigid and strong to withstand the weight, placing and putting of concrete and the movement of labor, material and plants. Form shall be sufficiently water rigid to prevent leakage of mortar. Form shall be supported or fixed by wedges of load being eased and the form removed without shock of the work and without hammering. Next one is laying. Before depositing the concrete, the reinforcement shall be correctly laid in the position and secured against displacement by tying with the soft iron wire. The bar shall remain in position 20 mm above the surface of centering. It means जो भी आप कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं तो वो बेसिकली 20 सेंटीमीटर तो सॉरी 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर का जो गैप है वो बेस से बीच में रहना चाहिए. तभी तो अगर 2 सेंटीमीटर आप उठाएंगे नहीं तो वो बीच में नहीं आ पाएगा ना आपका जो आपने जाल बना के डाला है उसका रेनफोर्समेंट का या फिर स्टील का. नेक्स्ट वन इज क्यूरिंग. क्यूरिंग इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द कंक्रीट. Just because curing जो after drying of concrete, curing process is incorporated which is due to reduce the process of drying concrete. अगर कंक्रीट को जल्दी ड्राई हो जाएगी कंक्रीट तो उसके बीच क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ग्लिसरॉल जेल है, अगर वो धीरे धीरे नहीं सूखेगा कंक्रीट मिक्स का देन बीच बीच में आपके क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी आपकी. इसलिए it shall be thoroughly kept wet for at least 15 days. Expansion joint. In every long length of slab work, expansion joint shall be provided at intervals at about 9 meter to 12 meter. Bearing. The bearing of slab not be less than thickness of slab with a minimum of 12 centimeter. Next one is DPC.
In order to prevent water absorption from the soils and thus causing dampness in the walls, the continuous layer of impervious material is provided. Such a material is known as horizontal damp-proof course. It is clear that जो भी आपका है सीपेज ना हो पाए या सीलन से बचाने के लिए आपको डीपीसी का यूज करते हैं हम. It consists of cement concrete 1:2:4, 1 part cement washed sand and 4 parts single gauge 6 mm to 20 mm unless to otherwise specified. The dam-proof course shall consist of 4 cm thickness of cement concrete with 1 coat of bitumen laid hot at 1 kg per square meter. It means जो डीपीसी की लेयरिंग आप करेंगे सब स्ट्रक्चर के बाद, ताकि सब स्ट्रक्चर से जो नमी है वो आपके स्ट्रक्चर में ना आना पाए, इसके लिए आप डीपीसी का यूज करेंगे. डीपीसी बेसिकली 4 सेंटीमीटर थिक लेयर होती है सीमेंट कंक्रीट की, और उसके साथ ही 1 kg पर स्क्वायर मीटर में डैम प्रूफिंग करते हैं आप वाटर प्रूफ मटेरियल विच इज नोन आल्सो नोन एज बिट्यूमेन लेड. The DPC shall extend to the full width of the superstructure walls, except in the case of outer walls, where it shall not be carried across doorways and verandas openings and similar openings. Vertical DPC shall consist of 12 mm or 18 mm thick with the ratio of 1:3 cement plaster with 2 layers of bitumen laid hot. Bitumen shall be blowed bitumen grade 85-25 having application temperature of 177 to 204 degree centigrade. Now the next topic is brickwork, which is to be discussed in next lecture. Thank you.